Hello and welcome to the second episode of solving the probable question of NEET 2026. So we had started the series in the last class, in the last date, the PYQ, that is probable question of NEET 2026 series, and that's the second class. So today we'll have a session where we'll solve 90 questions combining class 11 and 12, and these are one of the most important questions that have a huge chance to be asked in NEET 2026. Whether the question will be asked or relatable concepts will be asked, but these are definitely the hot questions for NEET 2026. Now, first question: alternate phyllotaxy is present in all except mustard, alternate phyllotaxy; sunflower, alternate phyllotaxy; China rose, alternate phyllotaxy, but guava is the exception. In guava, there is no alternate phyllotaxy. Next, the development of embryo is towards micropylar end. One liner question. The development of embryo is always towards the micropylar end. From the given example, Penicillium, Alternaria, Trichoderma, Neurospora, and puffball, Agaricus, Ustilago, how many produces sexual spore exogenously? Now, sexual spore exogenously are produced by the Basidiomycetes. Among them, Ustilago, puffball, Agaricus. These three are Basidiomycetes. So the answer is 3. That is, these three produces sexual spore exogenously. Inulin is a polymer of fructose. Next, one of the following criteria for 5 kingdom classification is reserved food material, no locomotion, no presence of central vacuole, no phylogenetic relationship, direct NCERT line is one of the main criteria for 5 kingdom classification. Which of the following have both chlorophyll A and chlorophyll C? Now, Polysiphonia, Porphyra, Gelidium, Gracilaria, these are the examples of Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae. So these two are example of Rhodophyceae. Yes or no? And Laminarin, Mannitol, these are not example of Rhodophyceae. So the answer is Laminaria. Chlorophyll AB, chlorophyll AC, chlorophyll AD. That's how we know, right? This is Chlorophyceae, this is Phaeophyceae, this is Rhodophyceae. Now Rhodophyceae ke kya chhe? Porphyra, Gracilaria, these are Rhodophyceae. So baki kya chhe? Laminaria. So this is an example of they only Laminarin have both chlorophyll A and C because this is the Phaeophyceae. Next, ATS ribosomes are found in, kahan milta hai ATS ribosome? In the cytoplasm of eukaryotic cell. Chloroplast 70S, prokaryote 70S, mitochondria 70S. Read the following statement 1 to 4. The seeds of lupine germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. 2,000-year-old viable seed is of Phoenix dactyliferia. Now, next, dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seed. This is also a true statement. Next, seed formation is independent of water. No, it is dependent of water. So, how many statements are correct? 1, 2 and 3. Next question, xylem parenchyma. Xylem parenchyma is a living tissue. It is meant for storage. Yes or no? And it stores food material and tannins. Next, the ratio of 9:3:3:1 in a dihybrid cross denotes dihybrid cross. There is complete linkage. No, the alleles of two genes are interacting with each other. No, in the case of multiple allelism, no, the alleles of two genes are segregating independently. Yes, so it's Mendel's law. Next, plant family like Convolvulus, Solanaceae are included in Sapindales. Direct NCERT question. They are included in which order? Sapindales. Next, we have match the following, column A, column B. First, chlorophyll A. Chlorophyll A का क्या कलर होता है? Chlorophyll A का कलर होता है bright और blue green. Next, chlorophyll B. Chlorophyll B का कलर होता है yellow green. So D2, where is D2? Then D2, then we have C4. So answer is 3. So 12 का answer is 3. Next, choose the incorrect matching pair. Capping 5' and yes, tailing 3' and true. Mature RNA, processed HNRNA, true. Splicing represent dominant. This is the incorrect pair.
Now once the BOD in sewage is significantly reduced, the resulting flocks are allowed to settle, and this sediment is called as activated sludge. It is called as activated sludge. Yes or no? Next, consider the following matching pair. How many are incorrectly matched? Nerve cell elongated, no. Nerve cell is branched. Nerve cell is branched. Then RBC is biconcave, yes, but it is not oval, it is rounded. Mesophyll is not narrow. White blood cell is amoeboid. So 1, 2, 4. 1, 2, 4. Is there any such statement? 1, 2 and 4? Yes, 1, 2 and 4. Next, select the correct items between column 1 and column 2. Okay, now symbiotic is rhizobium, C3. Then mycorrhiza is glomus, that is B2. Answer is 1. And free living is azotobacter, azospirillum, azobacter, these are free living. Next, select the correct match pair. Primary consumer growth, detritus raw material for decomposition. Saprophyte included in ecological pyramid? No. Pyramid of number in grassland? Yes, true. So answer is, select the correctly matched pair. Yes or no? So primary consumer में, so this is the answer. Yes or no? Next, ये incorrect होगा. Select the incorrectly matched pair. Yes or no? So this will be the answer. Incorrect होगा इसमें, तो answer will be saprophyte included in ecological pyramid. Yes or no? Next, हाँ, आंसर ऑप्शन इधर है. So select the corrected match pair. So corrected match pair will be, ये नहीं होगा, saprophyte नहीं होगा. So 1, 2, 4, 1, 2, 4, yes, 1, 2, 4. Then answer will be 3. Yes or no? Next, Henking observed, इसका आंसर है 3. Next, Henking observed that 50% of sperm in a few insects received a specific nuclear structure after spermatogenesis. The sex determination of honeybee is based on the number of sets of chromosome an individual receives. Yes, both the statements are true. Yes or no? Henking observed 50% of sperm in an insect after spermatogenesis. True. This is also true statement. Next, loss of certain species in an ecosystem may not initially affect its proper functioning. Next, loss of key species that drive major ecosystem functions is a more serious threat to the functioning of ecosystem than loss of few species. ये भी true है, ये भी true है. Both, but reason is not the correct explanation. Yes or no? Reason is not correct explanation, but both the statements are true. Next, we have a matching here. Now, Watson and Crick double helical model of DNA B1, only one B1. Yes or no? Next, 21 number. Statement is centromere split during anaphase, chromatids separate during anaphase state of meiosis. Centromere split during anaphase stage of mitosis. True. Chromatids separate during anaphase stage of mitosis. Both the statements are correct. Now each tropic level has a certain mass. Mass means standing crop. In Hershey and Chase experiment, the viral infecting agent was found to be DNA. Yes or no? DNA was said to be the genetic material. Next, photosystem 2 is located on the thylakoid membrane. True. Photolysis of water and NADP reductase occurs in stroma. No. Photolysis of water don't occur in stroma, but NADP reductase occur in stroma. So this is false. Means assertion is true, but reason is false. Now in sickle cell anemia, GAG to GUG, right? Sickle cell anemia में क्या होता है? There is change of single base pair. Yes or no? Point mutation. Single base pair में changes होता है. Next, the centrifugation technique that is used to differentiate heavy DNA from normal cesium chloride density gradient. Heterotropic nutrition can be found in how many types of protista? Heterotropic nutrition direct class note से है. Heterotropic nutrition is found in 3 groups of protista. Yes or no? It is found in 3 groups of protista. इसमें प्रोटोजोआ में मिलता है. Yes or no? Then slime molds में मिलता है, डाइनोफ्लैजेलेट्स में मिलता है. किस में मिलता है? डाइनो में मिलता है, स्लाइम मोल्ड्स में मिलता है एंड प्रोटोजोआ में मिलता है. सो दिस 3 आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीज जिसमें हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है.
The technology of biogas production, IARI and KVIC. Yes or no? Due to the efforts of IARI and KVIC, inhibition of succinate dehydrogenase by malonate, direct NCAT line, direct NCAT line is an example of competitive inhibition. Yes or no? Next, read the following statement. It contain water sap है, सेल सेप बनाता है, टारगर प्रेशर बनाता है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, आंसर इज वैक्यूल. ये सुन आंसर क्या होगा? वैक्यूल. इसके बाद एक ये वाला है कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ये सुनो, इसमें क्या दिया? ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, दैट इज B1 का एक ही है, बस आंसर आ गया. ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन cytoplasm. A3 TCA cycle occurs in mitochondrial matrix and electron transport chain occur in inner mitochondrial membrane. Next, select the incorrect statement. Regulatory sequence do not code for any RNA. Monocytonic genes in eukaryotic split. Exons are non-coding. No, exons are coding and introns are non-coding. Yes or no? Introns are non-coding. So this is the incorrect statement. Next, auxin induces parthenocarpine and tomato 2,4-D do not affect mature monocot plant. दोनों statement true है, but assertion is not the correct explanation. Okay, now next we have this habitat loss. Habitat loss कहाँ होता है? tropical rainforest में. A3 का है, बस A3. B1 Stelis cow is an extinct species and lantana, इसमें क्या होता है? alien species invasion होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, मेराइन फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ दैट इज सिलिका. तो ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ होना चाहिए. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. एमीबॉयड प्रोटोजोआ भी होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ भी होता है, बट वी विल गो विथ एमीबॉयड प्रोटोजोआ, दैट्स अ बेटर आंसर. नाउ एशियोट सीड सेट इवन आफ्टर इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर. ये किसमें मिलता है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर. किसमें मिलता है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर. तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है? VOC. याद है ना? क्या था एग्जाम्पल? VOC, वायोला. Then we have oxalis and finally we have comelina. So viola, oxalis, comelina, VOC. So इसमें ऑप्शन क्या है? viola. Which of the following is absent in gymnosperm? Gymnosperm में covered seed भी नहीं होता, free living भी नहीं है, triploid भी नहीं है, all of this. Now ex situ conservation मतलब बाहर, in situ means in exactly in the place. So it is a gene bank होगा and और क्या होगा? Biosphere reserve, national park and wildlife safari park. So 1 and 2. So these two are example of ex situ mode of conservation. ठीक है. Next question is during cytokinesis the furrow formation does not take place in plant cell. क्यों? क्योंकि plant cell में cell wall होता है. कैसा cell wall होता है? An inextensible cell wall. Fine. Next, linkage result in lower frequency of recombinant. True. Linkage is caused by gene being located on different chromosome. नहीं, it is located on same chromosome. So assertion is true, but reason is false. Next, mark the incorrect match pair. Adiantum is heterosporous. Selaginella, microphyll. Fern, macrophyll. Prothallus is multicellular. ये भी सही है. Fern is a macrophyll. ये भी सही है. Selaginella, Adiantum only. करेक्ट क्या है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर. ये भी ट्रू है. सो ओनली एडियंटम, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट गलत है. सिर्फ एडियंटम इज होमोस्पोरस. यस, एडियंटम इज नॉट हेटेरोस्पोरस. सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया, दिस टू आर हेटेरोस्पोरस बट एडियंटम इज होमोस्पोरस. ठीक है. नेक्स्ट वही है इन साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. रेसमोस एक है और साइमोस एक है. साइमोस में क्या होता है? मेन फ्लावर टर्मिनेट्स. Yes and no, all flowers are born in basipetal order. Flowers are born laterally. No, flowers born in ectopetal. No. So answer is 2. Genetic code is said to be degenerated. Q. Because one codon codes for more than or some amino acid are coded by more than one codon. Yes and how many genetic codes are there? 64. But how many amino acids are there? 20. So some amino acid are coded by more than one codon. ठीक है ना. So this that's why genetic code is said to be degenerate. Now consider the following matching pair. How many are correctly matched? Chromosomes and DNA doubling. S phase no. DNA doubling होता है, chromosome doubling नहीं होता है. Action of enzyme recombinase zygotic no. It is pectitin. Study of morphology of chromosome metaphase. Pairing of homologous chromosome synapses. True. So answer is C and D. Yes or no? The interaction between Mediterranean orchid and Ophrys, orchid Ophrys and bees is an example of mutualism.
ये सुनो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसिट। डायरेक्ट एनसीईआरटी में है ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डिसिट। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासेंटा इज द रीजन। प्लासेंटा क्या है? इट इज द रीजन वेयर fetus receives nourishment from the mother's blood. How many copies of DNA sample is produced after 6? So 2 to the power 6, answer will be 64. Now which of the following can activate the chemosensitive are situated adjacent to the rhythm center? So we all know that two things can activate this carotid arch, aortic arch and carotid sinus. ये क्या है? एक है change in the CO2 concentration and change in the H plus concentration. Both H plus and CO2 concentration if get increased, then the acidity inside the body will increase. So high concentration CO2 and high concentration of H plus. Parturition is a complex neuroendocrine mechanism. Direct NCERT line. Correct sequence, fertilization. पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला. डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी. ओके, सो हाइपोथैलेमस मेंटेन्स बॉडी पोस्चर दिया है ना, बॉडी पोस्चर इज सेरिबेलम. सो B5, वेयर इज B5? इज देयर एनी B5? ओके, B5. नेक्स्ट वी हैव हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी, C1. B5 C1. So answer is this one. Yes or no? And midbrain क्या होगा? Controls vision and hearing, right? Now correct sequence of meninges, dura mater, arachnoid mater and pia mater. Which of the following event of the cardiac cycle do not ever coincide? कभी एक साथ हो ही नहीं सकता. क्या नहीं हो सकता? Ventricular systole and atrial systole. Yes or no? दोनों systole एक साथ कैसे होगा? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया रिलैक्स करेगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पार्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमी कैटेगरी? टाइगर, टाइग्रिस. यस, पैंथेरा टाइग्रिस. टाइग्रिस क्या है? स्पीशीज है. तो आंसर इज दिस वन. यस एंड हाउ मस्का नॉट एन ऑर्डर, प्राइमेटा इज नॉट ए फाइलम, मोलस्का इज नॉट ए क्लास. यस एंड नो. नेक्स्ट, इंजेक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए may considered as gene therapy. इसको हम क्या बोलते हैं? जीन थेरापी. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन अदर देन किडनी हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट? लंग्स है, स्किन है, लिवर है. सो कहाँ है? ABC. आंसर क्या है? ABC. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द फर्स्ट ऑर्गन दैट गेट्स मेच्योर्ड इज हार्ट. हार्ट कब स्टार्ट होता है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल शेयर फोर चैम्बर्ड हार्ट? फोर चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है? मैमल्स में होता है. और किस में होता है? बर्ड्स में होता है. और किस में होता है? क्रोकोडाइल में होता है. सो क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स. फर्स्ट नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, CDRI लखनऊ, सहेली. नाउ लेट्स मैच दिस फॉलोइंग. फर्स्ट इज होमो हैबिलिस विल बी 650, देन होमो इरेक्टस विल बी 900, देन होमो सेपियंस विल बी 1350. यस और नो? सो क्या दिया है इधर? A विल बी 3, A3. बस एक दो ही है, A3. देन B, ओके, C दोनों में 1 दिया है. B इज होमो निएंडरथलिस, दैट इज B विल बी 4. सो आंसर विल बी दिस वन. यस और नो? हो गया ना? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. चूज द फॉलोइंग ऑप्शन विद रिगार्ड टू MTP. MTP is generally advised during first trimester. True. Used as a contraceptive method? No. Always surgical? No. Required existence of qualified professional? True. So 1 and 4. Choose the following option with regard to emphysema. एम्फाइसेमा में रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज होता है और एस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है. ये सुनो, एम्फाइसेमा में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया और एस्थमा में इन्फ्लामेशन. फ्लाइंग लिजर्ड इज ड्रैको. फ्लाइंग लिजर्ड का नाम क्या है? ड्रैको. एसर्शन एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट such as euphoria. With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptor present in our body decreases? No, it increases. Always the tolerance always increases. So assertion is true but the reason is false. Now हो गया. Next, regarding the heart activity is taking in a machine called as electrocardiogram. Electrocardiogram or electroencephalogram is EEG. EEG is for the brain. Yes or no? Next, nucleic acid would find in the acid insoluble pool. Nucleic acid or polynucleotide. Both the statements are correct. Statement 1 and 2 are correct. Now come to the next part. MTP are considered relatively safe during the
considered relatively safe during first trimester of pregnancy. PCR is used for amplifying DNA in a protein. फर्स्ट अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल. लास्ट को क्या बोलते हैं? सी टर्मिनल. एस्टेरियस क्या है? इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स में क्या होता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम. क्या होता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम. रेड मसल फाइबर, इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. रेड मसल फाइबर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है ना. नाउ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, then relax and return to uncontracted state in a coordinated manner. Through their action moves the body to adjacent to the change in the environment and to maintain position of different part. ये दोनों सही है. Then biomacromolecule present in the soluble pool. Soluble pool में कौन रहेगा? Soluble pool में न्यूक्लियोटाइड रहेगा. बाकी सब कहाँ रहेगा? Insoluble pool में. Which of the following is not an advantage of GM, genetically modified crop? Genetically modified crop through increased crop tolerance to salt, reduction in the post harvest loss, increase efficiency of mineral use, but increase reliance on chemical pesticide. No, chemical pesticide से बचने के लिए तो ये बनाया. ठीक है ना. Now read the following statement. During autoradiography, cells of colonies having the mutated gene do not appear on the photographic film. Probe does not have complementarity with the mutated gene. ये सही है. दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है. ठीक है ना. ऑटो रेडियोग्राफी, सेल्स और कॉलोनीज हैविंग द म्यूटेटेड जीन डू नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म. क्यों नहीं होता? ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है? ऑटो रेडियोग्राफी में एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रैंड होता है. ठीक है ना. और ये अगर हैविंग द म्यूटेटेड जीन अपीयर ही नहीं करेगा. क्यों अपीयर नहीं करेगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो मैच ही नहीं होगा ना. ठीक है. नाउ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर. Both the statements are correct. Aldosterone helps in the maintenance of electrolyte, body fluid, osmotic pressure. True. Aldosterone act mainly at the renal tubule, stimulate the excretion of sodium and water. No. Absorption of sodium, water and excretion of potassium. So assertion is true, but the reason is false. Answer is option 3. Assertion is true, but the reason is false. Which of the following require both strand of DNA as template? इसमें लगता है DNA replication में लगता है. Yes or no? Which of the following are catalyzed by Taq polymerase? टैक पॉलीमरेज किस में होता है? डिनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन में होता है टैक पॉलीमरेज. यस नो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन क्रॉप वैरायटी एंड रेजिस्टेंट? व्हीट, हिमगिरी, व्हाइट रेस्ट. दिस इज द करेक्ट मैच. पीरियडिकल एब्सटिनेंस क्यों करते हैं पीरियडिकल एब्सटिनेंस? बिकॉज इन दैट टाइम मोस्ट प्रोबेबली द ओव्यूलेशन वुड हैव टेकन प्लेस, और अगर ओव्यूलेशन हो जाता तो प्रेगनेंसी हो जाता, तो ओव्यूलेशन इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर. दिस इज द आंसर. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction to nucleus. DNA is positively charged, hence it moves to a DNA is negatively charged. So statement 1 is correct, but 2 is incorrect. 2 chromatid of chromosome separate in dash phase, anaphase 2 of M phase. Yes, on anaphase 2 of M phase. Extraction of DNA fragment from agarose gel, इसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूशन. Yes or no? इसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूशन. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग स्टेट. मैच क्या क्या दिया है? सिलेक्टेबल मार्कर. प्लाज्मिड का काम क्या है? डीएनए. ऑटोनोमस रेप्लिकेशन. ब्लंट एंड में तो SMA1 होगा. सो B2 कहाँ है? B2. A is 3. सिलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल. सो 82 का आंसर है. स्टैनली मिलर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट. ये सुनो. सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, centrifugation of desired compound produced in a bioreactor is a part of downstream processing. Yes, and it's a part of downstream processing. Which of the following bone is not a part of the axial skeleton? Axial skeleton में कौन नहीं आता? हायोइड भी आता है, स्फेनॉइड भी आता है, सैक्रम भी आता है. Axial means this one, right? Axial skeleton. लेकिन clavicle नहीं आता. Now, many transgenic animals are designed to increase our understanding of how gene contribute to the development of a disease. True. Many transgenic models exist for many human diseases such as cancer and cystic fibrosis. True, but reason is not the correct explanation. So that's how we can solve it. So we have to practice this every single day so that we get accustomed to solving 90 question, and we have to solve the entire biology paper within 30 minutes. And if we can solve that, then only we can aim to get at least 650 plus marks in NEET and at least 315 biology, and hopefully if the God is with us, then you can get 360 out of 360 in biology. So best of luck. Have a nice day.